Good morning, what a lovely day here in Bangalore and today I'm driving the 2024 Kia Carnival. काफी excited हुई ये गाड़ी को experience करने के लिए. And what is the plan for today? The plan for today is to drive this car for at least 100 kilometers here in Bangalore. ट्रैफिक में चलाऊंगा, हाईवे पे चलाऊंगा एंड देन आई आल्सो कैलकुलेट द रियल वर्ल्ड माइलेज ऑफ दिस कार. गाड़ी में फुल टैंक डीजल टॉप अप करवा लिया है. इट केम विद अ फुल टैंक ऑफ फ्यूल, थोड़ा ऊपर का था वो टॉप अप करवा लिया. ट्रिप मीटर हैज बीन रीसेट एंड नाउ इट इज टाइम टू बिगिन द माइलेज टेस्ट विद द न्यू कार्निवल. So I completed 25 kilometers of driving the Carnival and yeah, it comes with the 2.2 liter diesel engine making 193 horsepower and 441 Newton meters of torque. There's an 8-speed automatic over here and you get different driving modes. The Carnival is really big in size. आप लोग को दिख रहा होगा डैशबोर्ड कितना वाइड है, कितना लंबा है इसका. And the car is really massive. काफी लंबी है, so you have to be very careful when driving this car in tight lanes or when parking it because आसपास में आपको देखना पड़ेगा टायर्स पे कहीं टच ना हो जाए या फिर गाड़ी के साइड पोर्शन में, लोअर पोर्शन में टच ना हो जाए फुटपाथ या फिर कर्ब. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वंस यू गेट यूज्ड टू इट, इट इज एक्चुअली सो इजी टू ड्राइव. स्टीयरिंग इज वेरी लाइट. दिस ग्लास एरिया इज रियली बिग. ये मिरर में आपको अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है बट द स्पेस टू कीप योर फिंगर ओवर हियर टू एडजस्ट द मिरर इज एक्चुअली वेरी लिमिटेड. द ORVMs आर रियली बिग इन साइज एंड गाड़ी में आपको बढ़िया व्यू मिल जाता है. हाउ इज द इंजन? वेल, आई लाइक द परफॉर्मेंस फ्रॉम द इंजन. इट इज नॉट अ वेरी नॉइजी इंजन. काफ़ी क्वाइट है और डिसेंट परफॉर्मेंस ऑफर करता है. इट कैन एक्चुअली पुल द कार्निवल easily, so you know even when you're driving with a full load of passengers, I don't think performance will be an issue over here. And the different driving modes will do their usual job. Eco mode में गाड़ी थोड़ा relaxed तरीके से चलती है. Normal mode, the one in which I'm driving the car, is good enough for again normal driving. Sport mode में थोड़ी enthusiastic feel होती है. There's a smart mode also. Mileage on the MID is around 12.5 kilometers per liter right now, but मैंने ज़्यादातर हाईवे पे अभी तक चला ये गाड़ी. I'll drive this car in the city after a while and traffic में I think mileage थोड़ा गिर सकता है. Of course you get this feeling that you're driving something really big, really long because जब आप थोड़ी fast ऐसे lane change करते हो तो आपको पूरा body roll ऐसे feel होता है and you know that whole weight, the whole mass of the car is felt over there. Seat मुझे बहुत comfortable लगी. The front seat is really good. Lot of adjustment options, heating, ventilation सब कुछ है इसमें and अभी के लिए first impressions are very positive from the driver's perspective. Completed 50 kilometers with the Carnival. MID is now showing 14.4 kilometers per liter. काफ़ी ज़्यादा माइलेज दे रही है गाड़ी हाईवे पे बट अभी माइलेज थोड़ा गिरने वाला है बिकॉज शूटिंग कर रहे थोड़ा एंड उसके बाद ट्रैफिक में चलानी है गाड़ी. सो बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द रियर सीट, मैं आपको एक बार बूट स्पेस दिखा देता हूँ. यू गेट अ पावर्ड टेल गेट जो खुल जाएगा अभी थोड़ी देर में. इट्स अ बिग टेल गेट राइट हियर एंड यू कैन हैव अ लुक एट द कार्गो कैपेसिटी विद द थर्ड रो अप इन प्लेस. इसमें आपको नीचे यहाँ पे इतनी जगह मिल जाती है एंड ऑफ कोर्स यू हैव दिस थिंग ओवर हियर. तो इसके नीचे आप सारा सामान रख सकते हो, ऊपर भी रख सकते हैं. यहाँ पे आपको थोड़ा स्टोरेज एरिया मिल जाता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ओवर हियर ऑन द राइट साइड यू गेट दिस 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट. थर्ड रो सीट को आप फोल्ड भी कर सकते हो यूजिंग दिस थिंग. तो उसको भी मैं फोल्ड करके दिखा देता हूँ. ओके, इससे ऊपर आ जाती है एंड दिस इज फॉर फोल्डिंग द सीट. सो यू नो यू कैन फ्री अप अ लॉट मोर स्पेस इफ़ यू वांट. तो इसको लाते वापस अपनी जगह पे एंड यू माइट बी वंडरिंग कि सामान इतना नीचे है तो स्पेयर व्हील कहाँ पे. सो आई विल शो यू द स्पेयर व्हील ऑल्सो. लेट्स शट दिस फर्स्ट एंड कम ओवर हियर. तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील इज प्लेस्ड ओवर हियर. यहाँ पे कहीं आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा. आई होप यू कैन सी इट इन द कैमरा राइट नाउ. एंड हाउ डू यू एक्सेस द स्पेयर व्हील? यू कैन हैव अ लुक एट दिस क्रिवाइस ओवर हियर. यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है उसका टूल एंड रिमूव द व्हील एंड यहाँ से नीचे से व्हील निकल जाएगा. This footstep over here is not offered as standard with the car. That is an accessory and एक काम करते इसको बंद कर देते. I'll come that side and sit in the seat and you know show you all the features and the kind of versatility that you get with the Carnival. इसको ओपन कर देते हैं. So there are two ways to open this. ये बटन प्रेस करके भी ओपन होता है and by pulling this thing also you can open or close the door. तो ये हो गया. यहाँ पे मैं अंदर आ गया हूँ एंड यूजिंग दीज टू नॉब्स यू कैन मूव द सीट फ्रंट एंड बैक एंड विद दिस वन यू कैन मूव द सीट साइडवेज. तो ऐसे साइडवेज भी सीट जाती है इसकी एंड आई विल जस्ट
कीप दिस थिंग ओवर हियर राइट नाउ. आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ. यू गेट 2 sunroofs इन दिस कार. एक सनरूफ आपको आगे मिलता है. यू गेट द सेकंड सनरूफ ओवर हियर and you get these AC vents right on the rooftop, some lights over here and that's about it. AC vents आपको B pillar पे नहीं मिलते and even on for the third row passengers आपको सिर्फ rooftop AC vents मिल जाते हैं. The controls for the second row is placed over here. तो अगर आप यहाँ पे बैठे, if you're sitting over here, then you have to stretch yourself to this side and access the controls. Rest of the things are quite nice. I'll talk more about the seat in a bit, but I think that at this price point Kia should have probably offered a rear seat entertainment package. यहाँ पे 2 screen आ जाती तो काफ़ी अच्छा होता rear seat passengers के लिए. They could have got some OTT apps or some games or something to play around with. तो चलो एक काम करते हैं, ड्राइव पे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं. Sitting in the rear seat of the Carnival is such a good experience. I think there is nothing between the Innova Hycross and the Velfire when it comes to a comfort-oriented MPV. और वहाँ पे ये जो गैप है उसको Carnival एकदम perfectly fit कर लेती है. I like the space on offer over here. यहाँ से आप आगे की सीट को थोड़ा पुश कर सकते हैं and you get this boss mode. उसके बाद you free up a lot of leg room. You get this nice sunshade over here. ग्राम हैंडल अच्छा है, वेंटिलेशन हीटिंग का ऑप्शन आपको सीट पे मिल जाता है एंड यूजिंग दीज बटन्स यू कैन रिक्लाइन द सीट एंड एडजस्ट इट द वे यू वांट. तो मैं सीट को पहले पूरी पीछे स्लाइड कर लेता हूँ. आई एम गोइंग ऑल द वे बैक एंड नाउ आई विल जस्ट ओपन दिस फुटरेस्ट थिंग and get a nice comfortable sleeping position. पैर मेरा एकदम आराम से यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है. सीट को मैं पूरी रिक्लाइन करता हूँ and move up the leg rest a little and wow, this is so comfortable. I could sleep here and the good thing is that even at high speeds this feels so stable. I was doing speeds about 100 kilometers an hour. I took a corner also and the car actually felt very stable. Stability इसमें अच्छी मिलती है. The insulation from the outside world is also very nice over here and it is really amazing. I mean the only thing which is needed over here is a nice entertainment package. वो एक बार आ गया तो ये पूरा experience एकदम complete हो जाएगा and I think Kia should offer that at this price point. तो बाकी तो there is no reason to complain at all and this car also has a very usable third row seat also. तो वहाँ पे भी कोई ज़्यादा concern आपको होगा नहीं. So I think in terms of the rear seat comfort, the rear seat space, Kia has nailed it with the new Carnival. Completed 75 kilometers of driving the Carnival. The mileage has now dropped to 12.8 kilometers per liter because the car was idling for some time. Shoot कर रहे थे हम लोग गाड़ी को थोड़ा. But let's talk more about the ride quality of this car. The suspension setup is indeed very mature on the new Carnival. बहुत अच्छी ride इसमें आपको मिल जाती है. The car feels very stable throughout. In terms of features, I would say the Carnival is very loaded and it has ADAS level 2 features. ADAS के बहुत सारे features ये गाड़ी में आते हैं. You get a nice Bose infotainment system with 12 speakers. बड़ी सी स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल जाती है which is very clear to use, very crisp screen right here. And ये जो cluster है वो भी काफ़ी यूजेबल क्लस्टर्स में आपको मिल जाता है. नीट एंड क्लीन डिज़ाइन है उसकी एंड यू गेट डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स. द सेंटर कंसोल अगेन लुक्स वेरी नीट एंड ओवरऑल द कार डज हैव अ प्रीमियम फील टू इट एंड इनिशियली व्हेन आई सॉ द प्राइस ऑफ द कार फॉर द फर्स्ट टाइम आई थॉट इट इज़ वेरी ओवर प्राइस्ड. प्राइस अभी भी मुझे ज़्यादा ही लग रही है बट अगेन द कार्निवल डज समथिंग विच नो अदर कार कैन. इट कैन फिल द गैप बिटवीन द टोयोटा इनोवा एंड द टोयोटा वेलफायर. तो जो लोगों को एक कंफर्टेबल एमपीवी चाहिए उनको वो प्राइस रेंज में कुछ नहीं मिलता. दे हैव ऑल दीज बिग SUVs ओनली एंड सम सेडान्स ओनली बट ये टाइप की गाड़ी कोई है नहीं. सो इट इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू फिल द मार्केट गैप एंड या ऑफ कोर्स द कार इज एक्सपेंसिव एंड इट कम्स टू इंडिया वाया द CKD route. तो as I was mentioning before, the quality is quite nice. The features are well equipped on this car and the audio system is indeed very good. So you get 12 speakers from Bose and I'll just make you listen to the sound quality also. Sound quality is quite nice. आप इसमें enjoy करोगे and I would say that while the Kia Carnival is indeed very easy to drive, very pleasant to drive, but अगर आपको इसमें असली वाली feel लेनी है, you have to experience the rear seat only and कभी-कभी आप अगर अकेले चला रहे हो गाड़ी, you might get the feeling of being a chauffeur, being a driver, but it is nice to drive. वैसे
मतलब it is not very difficult to drive such a big car, but rear seat is somewhere the Carnival doesn't have any major compromise. And I am back at the same fuel pump after driving the Carnival for 103 kilometers. The MID figure is 11.1 kilometer per liter, and over here I filled up 9.07 liters to get the fuel tank up to the first auto cutoff mark, and the amount was 806 rupees. So mileage कितना मिला वो मैं बता देता हूँ. The mileage I got was 11.35 kilometers per liter, the real world mileage in a mix of city and highway driving conditions. And the running cost, I would tell you that also, 806 divided by 103 would be 7.82 rupees per kilometer, which I think again is fair enough. So ये गाड़ी काफी बड़ी है, powerful है, comfortable है, and I think the mileage figures are decent. If you do a long highway trip, अगर आप आराम से cruise करके जा रहे हो, then you can expect better mileage. 14-15 is also something that you can expect from this engine right here. कार्निवल मुझे कैसी लगी वो मैं आपको बताता हूँ. So I think the car is quite expensive for if you compare it to the previous Carnival, price काफी ज़्यादा बढ़ गई है, but it has a lot more features now. Space इसमें काफी decent है, and the car is very very modern. It is the latest spec that you get globally also, and no major cons with the car apart from the pricing. But I think इसका जो target segment है, जो target audience है, I think they really won't look at anything else. जिसको rear seat comfort के लिए ही चाहिए proper MPV, practical MPV, they will still go and buy the Carnival only. So that's about it from my side. Now it is your turn. You guys tell me, what do you think of the new Carnival? आपको अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या better हो सकता था? What will you buy? Innova, Carnival, Velfire, something else? बताओ नीचे comment section में.